الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जो है हमारे साथ आज चौथे रोज़े की इफ्तारी की महफिल में शरीक होंगे और मज़ा आएगा आपको। अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज़ बताइए, मैसेज कर दीजिए। गुरूल हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। एसके जूलर्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया मेकओवर वालेकुम अस्सलाम। आज हम बना रहे हैं ताहचीन जूजे, जो कि एक पर्शियन डिश है। तहचीन लिटरली मीन जैसे तह करते हैं किसी चीज को, तहचीन जिसकी तहें लगी हों तो लेयर्स में, और जूजे इज जैसे हम पंजाबी में चूचे कहते हैं, उसको जो है चिकन को पर्शियन में जूजे कहते हैं या मुर्ग कहते हैं। तो जैसे हम मुर्ग और चिकन दोनों इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह पर्शियन में मुर्ग और जूजे जो है वो दोनों चीजें इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का तारुफ कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हुए हैं। उम्मीद है सुबह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी सारी प्रेपरेशन मैंने कर ली है। हमारा गोल ये होगा कि हम पहले 15 मिनट में इसको जो है ओवन में डाल दें, ताकि हमारा उसको वक्त मिल जाए। ओवन को मैं अभी से प्री हीट करना शुरू कर देता हूँ। 400 डिग्री पे हमने ओवन को प्री हीट करना है, और आपको जो है मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मौजूद है। 3 कंपोनेंट हैं इसके। एक कंपोनेंट है आपके राइस और योगर्ट और चिकन। तो चिकन और अनियन साथ होते हैं, योगर्ट और राइस 3 कंपोनेंट है। उसके बाद इसकी गार्निश पे हम काम करेंगे। तो अभी हम जो है इसको सिर्फ फिलहाल जो अनियन का है फेस वो मैं कर रहा हूँ। इसको मैंने बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट गोल्डन कर लेना है अनियन को। चिकन को मैं ऑलरेडी सॉटे कर चुका हूँ और उसके क्यूब्स बना चुका हूँ। मैंने क्यूब्स बना के सॉटे कर लिया था। अगर आप ब्रेस्ट पीस यूज कर रहे हैं तो आपने उसको पहले सॉटे कर लेना है, ब्रेस्ट पीस को हाफ करके, और फिर उसको क्यूब्स में काटना है। अगर आप थाइज यूज कर रहे हैं तो फिर आप बेशक उसको पहले से काट के कर ले, इट स्टेज जूसी। आलिया मेकओवर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके जूलर्स हमारे साथ हैं, गुलूल हमारे साथ हैं, उम्मीद है सुबह हमारे साथ है। तो उम्मीद है कि आप सबको जो है आज की ये डिश बहुत पसंद आएगी। तो चिकन हो गया, ये योगर्ट सॉस है बनाई। योगर्ट सॉस में जितने इंग्रेडिएंट्स है वो सब आपके सामने वहां मौजूद है। इसको बनाने का कोई खास नहीं है, बस आपको सब मिक्स कर लेना है उसके अंदर। तो ये आपकी योगर्ट सॉस है जो हम उसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर ये कुक होगा। तो लिटरली मीन्स लेयर्ड चिकन, जैसे बिरयानी होती है आपकी, या बिरयानी ही की एक बहन है, हमारी ईरानी बहन है बिरयानी की, जिसको हम तहचीन तहचीन जूजे, ठीक है जी, तहचीन जूजे या तहचीन मुर्ग, जिस तरह से भी आपको याद रखना है। तहचीन का मतलब जैसे खुशाचीन होता है, वैसे तहचीन है। तहचीन का मतलब जिसकी लेयर्स लगी हो, ठीक है जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आज हमारा जो है तहचीन जूज बनने वाला है, या तहचीन मुर्ग बनने वाला है। अनियन को बस थोड़ा सा, जैसे उनको थोड़ा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, उसको भी निकाल लेंगे। ताजा फौजिया, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन, अहलन व सहलन फी बरनामिज हाई। We are making Tahchin Joojeh. We are going to Iran today. So in our journey with this Ramadan, our today's stop is Iran, and we're making something very, very delicious. इसमें से सारा प्याज भी हम यूज नहीं करेंगे, सारा चिकन भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस जितना लेयरिंग में हमारा उसके हिसाब से होगा। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि ये ख़त्म होगा तो फिर दोबारा मुझे बनाना पड़ता है, और कल जो हमने बनाया था वो फटाफट ख़त्म हो गया था, फिर उसको दोबारा बनाना पड़ा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा बना लिया, ताकि जब दोबारा बनाए तो उसमें आसानी रहे।
तो अगर आपके कोई मैसेजेस हैं तो आप ज़रूर हमें बताते रहिए। Now, you can use any casserole. You can actually cook it like biryani in a pot as well. So oven is not necessary. That's something important. Oven is not necessary. Um, you can use a casserole if you. I like casserole because you can, you can put it in the oven and then work on the garnish. You don't have to worry about anything. So this is the glass casserole that I'm going to use, a Pyrex dish. And what I'll do is I'll layer everything into it. So our onions are almost ready. They are turning golden brown at the bottom and they are very soft. So that's a beautiful thing to see. I have used chicken thighs. We should use 1.5 pounds for this recipe, but I used almost 2 pounds. So I'm going to take some out. So I want you to see exactly the recipe that is there. Q's Basic, walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम बना रहे हैं तहचीन जूजे, which is literally तहों वाला चूचा, आप उसको कह लें, लेयर्ड चूचा कह लें। उसको अगर पंजाबी में हम कहेंगे तो, पर्शियन में कहेंगे तो तहचीन जूजा कहेंगे उसको हम। मेरा ख्याल है अनियन जो है वो हमारे रेडी है। इसको बल्कि मैं साइड पे रख देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है कि ऑलरेडी हमारे पास बोल मौजूद है। हम उसमें आधे राइस उसमें मैं निकाल लूंगा। जैसे जो पानी ड्रेन हुआ है वो मैं निकाल देता हूँ। तो तकरीबन आधे राइस में आपको दिखाता हूँ भी। तकरीबन आधे राइस जो है वो इसमें हम निकाल लेंगे। और आधे राइस हमने क्यों निकालने हैं वो मैं आपको उसकी वजह जो है वो बता देता हूँ। आधे राइस इसलिए निकाले हैं, सबसे पहले हमने ये जो योगर्ट का मिक्सचर है इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो योगर्ट का जो मिक्सचर है हमने उसको मिक्स कर लेना है आधे राइस के अंदर। अच्छा, राइस जो मैंने बनाए हैं, राइस मैंने उसको बिल्कुल मीडियम में रखा है, आधे कच्चे आधे पक्के। थोड़ा सा शायद ओवर कुक हो गए होंगे, लेकिन इट्स बेटर देन अंडर कुक। आपको कच्चे नहीं रहने चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। तो ये इसको एहतियात से आपने यूं फोल्ड करना है। आपने उसको वो नहीं करना, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना, फोल्ड करना है। फोल्ड करने से क्या होगा कि आपका जो है चावल टूटेंगे नहीं। ये फोल्डिंग टेक्निक इसको कहते हैं। आप ऐसे चमचा घुमा के इसको ऐसे आप फोल्ड करते हो ऊपर, तो उससे आपके राइस टूटते नहीं है। आपने उसको उसमें फोल्ड कर दिया। थोड़े से इसमें राइस और डालेंगे। थोड़े सा राइस इसमें मैं और डाल देता हूँ। इसका देख के लग रहा है इसको थोड़े सा राइस की जरूरत और है।
और हमारे साथ अहमद शकूर हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आज हमारी इफ्तारी में आने का। ये बिल्कुल आपका बिरयानी केक आप इसको समझ लीजिए। ऐसा होगा कि इसको, और अरबी में इसका अरबी में मकलूबा होता है। आई डोंट नो इफ यू हैव एवर हर्ड ऑफ मकलूबा। मीन्स कि आप इसको अपसाइड डाउन पकाते हैं, अपसाइड डाउन पका के फिर इसको आप वो कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मकलूबा। जो इसका आउटकम है। टाटा फौज मरहबा फॉर न्यू वीडियो for Morocco. Yes, yes, we made harira soup. योगर्ट पे क्या ऐड किया है? योगर्ट के मैं आपको इंग्रेडिएंट पढ़ के दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। उतनी देर में थोड़ा सा इसको रख लेते हैं यहाँ पे, पहले डाल लेते हैं सारा कुछ, ताकि हमारा ओवन वाला जो काम है वो हो जाए। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, कैसरोल में आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल रफली, ठीक है जी, रफली 2 टेबल स्पून ऑयल है, और रफली 2 टेबल स्पून आपने मेल्टेड बटर, ठीक है जी। बटर अकेला क्यों नहीं डालना, ये आप सबको पता है। बटर अकेला आप डाल देंगे हाई डिग्री ओवन में तो क्या होगा उसका, तो यहाँ पे आपने साथ में मैंने आलमंड ऑयल डाला है, आप उसको ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। ये सारा आपने कोट भी कर देना उसको साइड पे, और इसको जनरसली आपने फिक्र नहीं करनी इतना ज्यादा वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पकेगा, उसके अंदर उसके ऊपर की क्रस्ट बनेगी, तो इसलिए जो आपका नीचे ऑयल और वो इकट्ठा हो गया है उसकी आपने फिक्र नहीं करनी, उससे घबराना नहीं। डोंट वरी अबाउट द ऑयल, it gathers at the bottom, it will actually help cook the rice and create that beautiful crust on it. So only on the side, because that will help detach it at the end when we turn it upside down. हेल्दी स्पाइस किचन हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और योगर्ट में क्या ऐड किया है, योगर्ट में काफी सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे और कौन है हमारे साथ, मैं जरा देख लूँ। ठीक है जी, सब मैसेजेस पढ़ लिए मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे आराम से हमने बड़े ही आराम के साथ ये जो है, ये पहला जो राइस का मिक्सचर है ये हमने डाल देना है। राइस और योगर्ट का जो मिक्सचर है ये आपका पहला मिक्सचर है जी, ठीक है। मेरा हाथ ना आ गया रहो आपके, इसको आपने डाल के इसकी जो लेयर है उसको फ्लैटन कर देना है। ये आपका पहला मिक्सचर है। इसमें सेफ्रॉन है, इसमें सॉल्ट है, इसमें पेपर है, इसमें और इस तरह के और क्या क्या था, इसकी मैं सारी लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ के बता भी देता हूँ। तो ये आपने जेंटली बस उसको वो लेयर कर दिया। उसके बाद जो है आपका ये अनियन को मैं वापस डालूंगा इसके अंदर। अनियन और चिकन का जो ब्लेंड है उसको मैं मिक्स कर दूंगा दोनों को। ये उसका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है जी। दैट इज अनियन एंड मिक्सचर, अनियन एंड चिकन मिक्सचर। चिकन में जो डाला है, अच्छा एक चीज जो मैं डालनी भूल गया हूँ, जो मिक्स करते हुए डाल दूंगा, जिससे मुझे अभी याद आई है, वो है टर्मरिक। टर्मरिक बहुत जरूरी है इसके अंदर उसके फ्लेवर प्रोफाइल के लिए। तो मेरे पास ये टर्मरिक मौजूद है, इसका 1/4 टीस्पून आप इसके अंदर टर्मरिक जो है वो मिक्स कर दीजिए। हल्दी, इसके अंदर टर्मरिक मिक्स कर। मैं भी देख रहा था कि इसका कलर जो वो नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए था, तो टर्मरिक हेल्प्स विद द कलर एंड आल्सो इट्स वेरी गुड विद एनी प्रोटीन, एनी मीट दैट यू कुक, टर्मरिक हेल्प्स अ लॉट। ठीक है जी, ये हमारी हो गई दूसरी लेयर। इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं।
मेरा ख्याल है हमारा कैसरोल छोटा पड़ गया है इसके लिए, तो चिकन हम सारा तो नहीं डालेंगे, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा उसमें से रख लेते हैं और इसको ऐसे स्प्रेड कर देते हैं कि इस पर राइस की एक और लेयर जो है वो लग सके, ऐसा ना हो कि हमारे जगह ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है कि चिकन थोड़ा सा इस कैसरोल के लिए जो है वो ज़रा सा ज़्यादा हो गया है। और हमारे साथ कौन है? चट्ठा फूड ब्लॉग्स हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, चट्ठा फूड ब्लॉग हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो गया जी। तो तीसरी लेयर जो है वो डालने से पहले हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपने डाल देना है सॉल्ट, हस्बे जायका, क्योंकि इसमें सॉल्ट जो है वो थोड़ा कम है। सॉल्ट मेरे पास ज़्यादा आ गया है, इसको मैं ज़रा निकाल लूँ। इसमें थोड़ा सा आपने डाल लेना है सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें डाल देना है अपने ऑयल, जस्ट अ लिटिल बिट, ड्रिजल, एंड देन जस्ट मिक्स इट। ये हमारी थर्ड लेयर जो है, उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। हमारे जो सारे राइस है उसके ऊपर आ गए। ठीक है, तो आपने इवनली सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। थोड़े से शायद राइस और होते तो वो भी इसमें अच्छे से आ जाते, लेकिन वो कैसरोल के साइज की वजह से मेरा ख्याल लेयरिंग थोड़ी सी हमारी डिफरेंट हो गई है। मैं जो हूँ वो ग्लास का कैसरोल यूज नहीं करता, सिरामिक है एक और मेरे पास, उसके थोड़े से डायमेंशन डिफरेंट है। तो कैसरोल के साइज की वजह से आप देख लीजिएगा, जब भी आप इसको थोड़ा सा आप इसको जेंटली प्रेस कर देना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, तो ये आपका बन रहा है जी राइस का, राइस और चिकन का केक। अच्छा जी, इसमें अब हमने लगानी है फॉइल। इस पर आप लिड भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फॉइल जो है काफ़ी है। लेकिन आपने सिंगल फॉइल नहीं लगानी है, और इसको थोड़ा सा साइडों से एजेस को क्रिम्प कर देना है। इसको इन प्लेस रखने के लिए आई रियली विश कि मेरे पास इसकी लिड जो है बहुत ही, हालांकि मुझे मेरी मामा ने कहा भी था कि लिड पहले से ढूंढ के रख लिया करो। इसको ऐसे क्रिम्प कर देंगे अच्छे से। क्रिम्प करने से क्या होगा कि जो उसकी स्टीम है वो वापस उसके अंदर जो है चली जाएगी। ओवन जो है वो मेरा 400 डिग्री पे हो चुका है बेक, प्री हीट। उसमें हम इसको जो है रख देते हैं। आपके मैसेजेस देख लेता हूँ यहाँ से फटाफट। जी, कढ़ी राइस, आप ये देख लें कि योगर्ट है, हाँ उसमें कढ़ी राइस का है, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक, लेकिन उसका टेस्ट डिफरेंट है, बहुत टेस्ट प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है। जब आप बनाएंगे तो आपको, हाँ कलर के लिहाज से उसका कलर जो है वो सिमिलर है। तो ये जा रही है हमारी अवन में जी। अवन में सेंटर में मैंने उसका लगाया हुआ, इसको हम अवन में हमारे 20 मिनट हो गए हैं, तो बिल्कुल जो है, इफ एवरीथिंग गोज फाइन देन इन 40 मिनट्स इट विल बी रेडी।
So that was our first thing. I wanted to get it out, get it in there in 15 minutes, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई. खैर, आपके messages देख लेते हैं. Thank you, Tata Fozia. Thank you for your nice messages. And Tabarakallah, bravo, Mobbi. Thank you. Thanks, Tata Fozia. Now, I have some butter here, so I'm going to use that to prepare my garnish. The most traditional garnish is right here. 1 second. Let me just clean up a little bit. When you saute chicken and onion and everything, there's oil everywhere. And then there's other stuff that flies around. So it's good if we just clean it at the same time. So here I'm just going to throw in some butter into the pan here. Oops. Although it says, I mean, the recipe traditionally does not use butter, but I'm using a little bit of butter and again, a little bit of almond oil. I'm a big fan of almond oil instead of olive oil. It has a very high smoke point, so it doesn't burn easily. And I'm just going to do that on the same stove here. So let it just melt and get hot. And what I'll do is I'll take these currants. It's not really currant in in Persian. It is called, well, it's called barberries, but in Persian it is called something else. I'm forgetting the name right now. So really, what you need is you need to take some barberries they're called, and use them for garnish. So what I'm going to do is I'm going to create a little bit of garnish on top once it is ready of these. But I have to, before I do that, in my pan here, I will have to, let me just move the camera a little bit closer. So I'm just going to give them 1 minute in the butter and almond oil mixture. All right. I can also toast my almonds and pistachios that I have for garnish, but I need them as is rather than toasted. So I just want them to absorb that nice buttery flavor, swell up a little bit. So if you see, it's no longer the dried barberry that we put there. It's kind of swelling up, if you can see it here. So you see, it's kind of swelling up. And when you
smell that little bit of aroma coming out of there, just turn off the heat, and I'll drain the fat out of it. Now, one of the main key differences, other than spices and everything, between this and biryani is that biryani is cooked this way, but it's not turned upside down. Like there is no makluba element, or once you cook it, you just take it out directly. But in this case, there is a crust that is formed, and that crust, actually, you cut through it. You actually slice this dish. If all goes fine, we will see that. We'll hopefully be able to slice that. So that's my garnish ready. All three garnishes that are ready here. And now it's going to get really boring because all we need to do is to wait for another 33 minutes. Ruhi Diaries is with us. Thank you very much for joining. Don't have many messages here. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So let's go through the whole process. All right. So the ingredients that I have, let me open that up here in my notes. Actually, I put that in the description as well. So let me just open it up from there. So I'll give you a detailed overview of what you should and should not do when it comes to this whole makluba, not makluba really, the Tahchin Joojeh. So here is what we have. We have three components. We have yogurt sauce, as it is mentioned in my description. All right. So you take 2 cups of plain yogurt. All right. इसका टेस्ट स्वीट है. इट लुक्स लाइक रेड शहतूत. नहीं, इसका टेस्ट स्वीट हल्का सा है, और पर्शियन राइस में आपको जो है वो मिलता है ये रेजिन्स की तरह का. तो ये डाला जाता है, अफगानी पुलाव में भी डाला जाता है, अफगानी राइस में भी डाला जाता है, शायद आपने देखा होगा. तो अफगानी राइस जो है, दे आल्सो यूज दिस इंग्रेडिएंट. इसको बारबेरीज कहते हैं अंग्रेजी में. उर्दू में क्या कहते हैं ये मैं पता लगा लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ. हाँ जी, इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है. बारबेरीज का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है. बारबेरीज इन उर्दू इज बारबेरी. अब ये तो मुझे लगता है किसी लेजी बंदे ने लिखा है, तो बारबेरी को बारबेरी ही कहते हैं. सो बारबेरी इज कॉल्ड बारबेरी इन उर्दू अपेरेंटली. एनीवेज, योगर्ट सॉस 2 कप्स प्लेन योगर्ट. उसमें मैंने मिन्स कर लिए थे 2 गार्लिक क्लोव्स. गार्लिक के 2 क्लोव मीडियम साइज के लेके उनको मिन्स कर लिया था बिल्कुल, और वो योगर्ट में डाल दिए थे. फिर उसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ड्राइड मिंट. लेकिन मैंने खाली ड्राइड मिंट नहीं डाला, मैंने उसमें थोड़ा सा क्वार्टर टी स्पून डाला है मिंट, ड्राइड मिंट, और क्वार्टर टी स्पून डाला है ड्राइड बेसल. मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूँ. वैसे तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन दिखा देने से ये होता है कि अगर आप लेना हो और आप बाजार में जाए तो आपको पता लग जाएगा देख के कि हाँ ये दिखाया था मोबी भाई ने. राइट. सो ये है आपका बेसल. ठीक है जी. और इसमें जो है आपका ये ड्राइड बेसल है. ठीक है, ये ऐसे आपको दिखता है, और ये इसका पत्ता जो है ये छोटा बिल्कुल उसका हुआ है, तो क्रश्ड होता है पत्ता. और ये ड्राइड मिंट है, तो पुदीना है ड्राई हुआ हुआ. तो ड्राइड मिंट, इट्स अरबी में इसको नाना कहते हैं. तो इट्स बेसिकली दैट. ये आपके 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए. ये सब आपने डाल देने हैं जी योगर्ट के अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. उसके अलावा आपने क्या करना है,
योगर्ट के अंदर ही आपने एक अंडे की जर्दी जो है वो फेंट कर डाल देनी है। अब अंडे की जर्दी हम नहीं डालते, मैं नहीं डालता, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं बेटे को एलर्जी है उसकी योगर्ट सॉरी अंडे की, तो अंडे की जर्दी वी डोंट पुट दैट, तो वी जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ एन एप्पल सॉस। अब एप्पल सॉस में थोड़ा सी मिठास होती है, तो उसमें आप एप्पल सॉस अगर लें कभी भी, अगर अंडे का किसी को प्रॉब्लम है तो एप्पल सॉस जो आप लें वो ऐसी लें कि जिसमें आपको मिठास ना हो, नो शुगर एडेड, लेकिन एप्पल में इटसेल्फ मिठास होती है, बट दैट्स अ ट्रेड ऑफ दैट वी मेक अ लिटिल बिट टू अवॉइड यूजिंग एग्स इन आवर डिश हियर। ठीक है जी। उसके अलावा आपने उस अंडे की जर्दी में जो है आपने क्या डालना है, वीडियो की डिटेल्स में यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके, अच्छा उसका मैंने नहीं लिखा हुआ, तो उसमें आपने जो है और सेफ्रॉन डालना है। सेफ्रॉन का मैं आपको बता देता हूँ, सेफ्रॉन आपने लेना है 1/8 ऑफ अ टी स्पून या 1/4 ऑफ अ टी स्पून। सेफ्रॉन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पाइस, तो थैंक गुडनेस दैट वी ओनली हैव टू पुट अ लिटिल बिट। तो जो हम सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन में आपको वो भी सबको पता ही होगा, जाफरान जिसको कहते हैं, ग्राम पर ग्राम इट इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। ठीक है जी। तो इस तरह की डिब्बी में आपको मिलेगा कहीं से भी, तो ग्राम पर ग्राम सेफ्रॉन इज एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, बट इट इज वेरी लाइट। तो इसमें से आपने थोड़ा सा लेना है, उसको आपने ऐसे ही नहीं डाल देना, उसका फ्लेवर निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने उतना ही उसमें डाल देना है सॉल्ट। ठीक है, और उसको रगड़ लेना है। तो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट इज वेरी एब्रेसिव, तो वो उसको बिल्कुल तोड़ देता है छोटे छोटे टाटा फौजिया, I don't know if you are leaving. I don't understand what you said. Please repeat your message. अब तो मैसेज आप रिपीट कर दें। तो सैफरन को आपने, मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से ये सैफरन है, थोड़ा सा लेके उसको आपने डालना है अपने यहाँ पे जितना भी है उस पर नमक डाल के उसको यही मल लें। लेकिन होगा क्या कि आपके हाथ पे बहुत सारा कलर आ जाएगा, तो आप उसको बेशक प्याली में कर ले, या बेशक उसको कूली डंडा लेके आप थोड़ा सा उसको पीस लें। ठीक है, तो वंस यू डू दैट, then your saffron will release its, it will be very very, so उसको फिर आप उसको योगर्ट में डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें, and let it sit for like 15-20 minutes, because let the color come out, right? You want that nice color, क्योंकि जो अभी बॉटम है उसका हमारे कैसरोल का, उसमें वो सैफरन वाले राइस है, और उसके अगर आप देखें तो इट्स वेरी वेरी शुड आई से orange in color, reddish almost, and the rest of the rice will be not that color. So वो color का combination that looks very nice too. ठीक है, so that is your yogurt sauce. So all together, all of it combined is your yogurt sauce. ये आपकी yogurt sauce होगी. Once your yogurt sauce is ready, then what you're going to do is you're going to go to the next step, जिसमें आपने chicken और onions का मैंने आपको बता दिया. So 1.5 pounds of chicken thighs or breast cut into small pieces. But if you are making it with chicken breast, remember it gets very dry very fast. So chicken breast gets very dry very fast. So what you have to do is you have to cook it first. Half कर लें अगर आपका पैन छोटा है तो. You cook the chicken breast first and then cut into the pieces. If you have chicken thighs boneless, you can cut them into pieces and then cook. That's the main difference. ठीक हो गया जी. Sobi's Kitchen, Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for joining us. I'm going over all the ingredients. Our today's dish, our stop is Iran. Our today's dish is already in the oven. It's going to take another 25 minutes. But in those 25 minutes, I am taking the time to walk everyone through each and every ingredient that we have here. So what is the next ingredient we have? We have 2 large onions that you need to slice. डाइस नहीं करना है, स्लाइस करना है, जिस तरह सालन के लिए काटते हैं आपने देखा था जब मैं उनको कर रहा था, तो यू मस्ट हैव सीन दैट. तो आप देख लें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ उसका जो एंड रिजल्ट था, दैट वाज अ सॉफ्ट गोल्डन अनियन. तो आपने इस तरह से काटना है, और जो एंड रिजल्ट आपका अनियन का होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी.
तो आपने उसको स्लाइस करना है और स्लाइस करके आपने अनियंस को सॉटे कर लेना है। उसकी तरफ अभी आते हैं। रूही डायरीज अब इजाजत सेहरी बनाने जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह विल सी यू इन द सेहरी टुमारो मॉर्निंग. Your Sehri is right now, but on my Sehri, bless you. I mean, thank you very much. Thank you. Same to you. And Ramadan Mubarak. I hope that you continue to benefit from all the good stuff that Ramadan has to offer to us. Then we go on to the next thing, which is so onions. We heard 2 large onions, and then you need approximately 3 tablespoons of oil. But that you need half of it. You need to saute the chicken, and then rest half you need to use to saute the onions. Okay. Sorry, I have a message. Let me just quickly check. Okay, sorry for that. So now that I have here, I will just continue. I will. My phone is busy. I will reply to my messages later. So saffron. We talked about. Sorry, we talked about olive oil. So olive oil you can split into 2 parts. All right. Your olive oil that you need, olive oil, or I'm using almond oil. Now, almond oil is my more favorite than olive oil. Olive oil has a taste to it. If you take grapeseed oil or if you take almond oil, they have lesser of a flavor in them. ठीक है जी? Sobi kitchen, wait. It is in the oven. Then when it comes out, then you will see it. Right now, all you see is the garnish that we will use to garnish it. Okay, so basically, no, Tata Fozia, Q's Basic is not leaving. She is still here. Ruhi's sister, she is leaving. So, Ruhi Diaries, Allah Hafiz, thank you very much. Then you have 1.5 tablespoon of teaspoon of salt. You have 1 eighth of turmeric. You saw me putting it on there, and fresh ground pepper to taste. So that is for your chicken and onion. So essentially, what you're doing is you're going to saute all the chicken. That will be your middle layer. All right, and then you are going to mix the sauteed onions. Onions should be golden, and onions should be soft when you actually put them in. So that is what you want there. After that, we have the third part, which is where you bring it all together. All right, and you cook the rice. So rice, you have to cook them halfway. I probably cook them little bit over by a notch, but we'll see how it all works. And then next thing is egg yolk. We already talked about. So you take 2 cups of long grain basmati rice, which is usually what we use, but you have to wash them a lot. All right, 5, 6, 7 times because you want them. You want them absolutely no starch in there. So that's why you need to wash them. उनको अच्छे से धोना है, 5, 6, 7 बार उनको धोना है आपने. और क्या है जी, योगर्ट और आपको यूज करने की जरूरत नहीं है. ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है. या आप इसको एज ए योगर्ट सॉस बना के जरूर यूज कर सकते हैं. इसके साथ योगर्ट सॉस होती है, वो अगर वक्त हुआ, अभी तो वक्त है, अभी बना सकते हैं. लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, फिर देखते हैं अगर वक्त है तो हम योगर्ट सॉस बना लेते हैं. 1 कप योगर्ट लेके उसी तरह से योगर्ट सॉस आपने बना लेनी है. थोड़ा सा उसमें अपने जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ. तो 1/4 टीस्पून सेफ्रॉन थ्रेड्स हमने देख लिया. वो पहले हमने बात कर लिया सेफ्रॉन की और एग योग्स की, और योगर्ट के साथ उसमें हमने डाल दिया था. और फ्रेश ब्लैक पेपर हो गई, और ऑलिव ऑयल हो गया, और मेल्टेड बटर हो गया, और बारबेरीज हो गई ये हमारे. और इसके अलावा आप जो है पिस्ताचियोज और आलमंड जो मैंने रखे हुए हैं, यू कैन यूज दैट. ओके, सो ऑसम हो गया, जबरदस्त हो गया. अभी जो है आपको
तो योगर्ट को बेसिकली थोड़ा सा उसी तरह से रायता की तरह थोड़ा सा बना के salt and pepper डाल के आप उसको बना सकते हैं. On another amazing recipe shared with us. Thanks a lot. You're doing really good. जी, hopefully it will come out really nice. Once we do that, it's going to be another 20-ish minutes before we can take it out. So let's hope for the best. And I will be able to actually see it. That's the beauty of using the glass one. I can actually see what is going on at the bottom. So this trip today is to Iran, and it's one of the traditional Ramadan dishes of Iran. I can do a lot of cleanup in the meantime. You will need this. You can put the foil back. और क्या गपशप है जी? अच्छा, इसके ऊपर गार्निश जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से की जाती है. उसमें जो है आप रोज पेटल्स भी डाल सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा रोज सिरप भी डाल सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन गार्निश इट. मैंने सिंपल उसका जो है वो, बल्कि एक काम करते हैं, आलमंड्स जो हैं उनको कोशिश करता हूँ मैं उनको बारीक सा स्लाइस कर लूँ. दैट कैन बी ऑल्सो अ गुड एडिशन. जिस तरह से हमारे पिस्ताचियो स्लाइस हुए हैं उसी तरह से आलमंड्स को भी कर लेता हूँ. वो स्लिवर हैं अभी, तो मैं देखता हूँ कि अगर वो I can turn them into more matchsticks. बजाय स्लिवर्स के उनको अगर matchsticks कर सकते हैं तो पता नहीं वो इतने ड्राई अगर ना हो, then you can convert them into matchsticks. Something like this. This is probably more easier. It's your choice. You can have it like this, or you can have it like this. So if you're roasting them, usually this is the best bet because they roast really nice and they look like thumbnails. And then we have our beautiful barberries. So I will put them here on the white background so you can see them clearly. This is what they look like. I'll bring it closer as well. And then you have your pistachio, of course. So let me try and show you a close-up here. So that is how they end up looking like. Let me just put some light on it as well. So they're really tiny. लुक्स यमी जी, थैंक यू. अभी अभी आने दें जी, सो भी थोड़ा वेट करें. अभी असल चीज़ तो आने वाली है, ये तो उसके सिर्फ ऊपर छिड़कने के लिए. Gulul Tarafoji is saying she has information about saffron, but it will cost. Yes, she knows. She said she knows about saffron, but it's very, very expensive. And we all know that saffron is very expensive. And gram by gram, it's actually more expensive than gold. और अगर आपको मालूम हो कि इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं, तो ये लिटरली जो होता है, फूल एक होता है, फूल के अंदर जो होती है उसकी पेटल्स नहीं, फूल के अंदर जो स्टिग्मास होते हैं, जो अंदर की एक डंडी होती है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है. एक एक स्टिग्मा
तो इसकी हार्वेस्ट करने में और सारा करने में इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है. इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पाइस. So basically you take those flowers, you grow those flowers, and then you harvest their stigmas, and that's what saffron is. So that is why it is very very expensive. और इसका फूल जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है. ये जो है इसका आपने कभी अगर सटाइवा शुगर सटाइवा कहते हैं उसको, सटीवा, आई डोंट नो, वो जो उसमें ये क्रॉकस स्टाइवस होता है, इसके पौधे को कहते हैं. और इसको जो है तकरीबन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रॉप्स इन द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट 4000 साल से जो है इसकी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई भी सवाए गंदम के और बहुत मेन मेन जो क्रॉप्स हैं उस तब से इसकी जो है वो जारी है. थोड़ा थोड़ा साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देते जाते हैं. अंजुस किचन हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. और आपको पता है कि कोल्ड और कफ के लिए और स्टमक इश्यूज के लिए और बहुत सारी और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है. बेस्ट उसके जो है बेनिफिट्स बहुत होते हैं. ओवरऑल आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी सेफ्रॉन इज वेरी वेरी गुड. जी ज़बरदस्त. अभी ये थोड़ा सा उम्मीद है कि हमारे अगले 13-14 मिनट में हमें वो जो है वो मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं कि हाउ इट गोज. अगर उसको फिर थोड़ा सा ओवर रखना हुआ तो आज के हमारे पास चूंकि आजकल टाइम है सिर्फ इसलिए कि अगर उसको थोड़ा सा ओवर रखना हुआ तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा लाइव स्ट्रीम को. बट राइट नाउ होपफुली वी विल बी एबल टू हैव इट इन टाइम, क्योंकि बहुत हाई नहीं है उसकी लेयर. तो उम्मीद है कि जल्दी जल्दी वो हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस संजूस किचन. हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? और आपने कल कहा कि आप आएंगे इफ्तारी के लिए और आप आई नहीं. And those who are very interested in culinary world, I can tell them a few more things about this dish. So आपको सिफारदिक कुजीन जो है, जो स्पेनिश ज्यूज जो है वो उनको सिफारदिक रेस कहते हैं, उनके उनकी उनकी डिशेस में से शामिल है, जो कि स्पेन, पर्शिया और शाम के इलाकों में काफ़ी उनकी जो है वो है. और जब वो स्पेन में जब 1500 में ईसाइयों ने यहूदियों की नस्ल कुशी की तो उस वक्त वो काफ़ी सारे माइग्रेट करके तो अपने साथ ही इस तरह की डिशेस लेकर आए. सेफ्रॉन जो है उसका स्पेन से भी बहुत ताल्लुक है, कुजीन से. रेसिपीज भाई शाजी हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बहुत शुक्रिया आपके आने का. अभी हमने जो है अपना डिश बना के ओवन में रखी हुई है. थोड़ा सा बोरिंग टाइम है, हम गप्पे शप्पे मार रहे हैं. अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो ज़रूर आप बताइए, ज़रूर पूछिए. डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, मैंने उनका थोड़ा सा वॉक थ्रू भी कर दिया है. तो सेफ्रॉन का मैं बता रहा था कि इट इज मेड फ्रॉम द स्टिग्मास ऑफ लिटिल पर्पल क्रोकस फ्लावर्स. हर फ्लावर के सिर्फ 3 स्टिग्मास होते हैं. ये डेलिकेट और उनको हाथ से उतारना पड़ता है, आप मशीनें इस्तेमाल नहीं कर सकते. और तकरीबन 450 टू 500 स्टिग्मास से 2 टेबल स्पून बनते हैं. ये जो इंडिविजुअल आपको दाने नजर आते हैं, ये हर दाना जो है ये एक स्टिग्मा है. और 1 टेबल स्पून में जो है तकरीबन 200 से 250 तक वो स्टिग्मास होते हैं. तो अंदाजा कीजिए कि एक एक फूल से 3-3 उतार के तो आपके 1 टेबल स्पून तक लाने तक कितना उसको जो है वो टाइम लगता है. रमदान करीम. आपको भी बहुत शुक्रिया. उम्मीद मैं तो सेहरी नहीं करती, बस तुखमलंगा वाटर फैमिली ने एंजॉय किया. जी ज़बरदस्त है, वो भी बड़ा अच्छा होता है, सारे दिन बड़ा अच्छा रहता है.
Okay, لنا فما هذه الحبوب الخضراء والحمراء والبيضاء. Okay, so the khadra one is pistachio. The green is pistachio, Tata Fozia, and hamra is the is barberries. Barberries. They're currants. They're called currants. They're like little dried grapes. And the baida one, the white one, is almonds. So those are the three garnishes that we have. So I hope that you will understand. What is almond in Arabic? Quiz time. Almond in Arabic is loose. Tata Fuzia has a loose. Pistachio is pistachio, I think. Fastak again, I think. Don't remember. I will look up. Yeah, fastak. And barberries in Arabic is al-barbaris. Al-barbaris. Has al-barbaris. Fastak, loose. Alrighty. So then basically I was just telling you all about it. It's very frequently used in Persian cuisine. And hopefully today's dish will turn out fantastic and you will love it. Let me just peek and see what's going on at the bottom. It is fantastic right now, but it still need probably another 10 minutes. So let's see. And when we turn it upside down, hopefully it stays like that, and then hopefully we'll have a beautiful um, dish on our hands. All right. I'll just take a very, very quick break and I'll be back. All right. We may have a little bit of an issue. Where am I going to turn it upside down? I used to have a tray, but that's probably somewhere in the storage right now. I had a large tray. So I need to go and hunt a large tray pretty fast. Okay, I'm just gonna go rush to my backyard and see if I can find something. I'll be back in 2 minutes.
All right, I found something. All right. Um, Thank you very much for staying here. अब देख नीचे है वो, हाँ? शहरी का टाइम अच्छा जबरदस्त। तो बस अभी जो है टाइम हो गया, मैं इसको निकाल के देखता हूँ। एक ट्रे मुझे मिली है जिसमें इसको हम निकालेंगे, लेकिन अभी लगता है कि इसको 5-6 मिनट और है। We may have to extend this a little bit. I'm really looking forward to it. And if I take it out too early, then it's not going to be a lot of fun. It will still be edible because everything is cooked, but I really want that nice feeling when you actually turn it upside down and it comes out really, really nice. And all that butter that we put in there will melt over it and coat it nicely. So that's the part that I don't want to miss. Alrighty. Let it sit for a few minutes. जी अभी मैं उसको निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये ट्रे में इसको जरा साफ कर लूँ, ड्राई कर लूँ। All right, I'm going to make some space here because the only tray that I have available is actually huge. And when I say huge, you'll know in a second. It's actually huge. It's from the catering days. Now that's just baking stains on it. Don't worry about it. It's all good and clean. We bake a lot of stuff in it. Alrighty, so let's just see how it is coming along. It has not formed a crust yet, so it's going to be a few more minutes. My timer has just ended, but I think it needs another 5-6 minutes. Hello, MS Family Kitchen. How are you? If you guys have to go for Sehri or something else, you can come back and see it. But I just want to make sure that once we are ready, we actually get to enjoy it, completely.
Give it 5 more minutes. And after 5 minutes, no matter how it is, we will just take it out. Yes, Farah Fawzia, we're waiting for the final result as well. It's just that it's a little bit late. It usually takes anywhere between 40 to 50 minutes. So 40 minutes have passed, 50 minutes have not passed. So I'm just going to give it 45 minutes and take it out. Now, if it is not fully ready, then that's what it is. We have to close our live stream as well. But hopefully, you will get the idea that how it is, and then you can on your own if you try to replicate it, you can give it a little bit more time, and then let it form that beautiful crust that it is known for, which should take a little bit more time here, but that's the time we don't have today. So I have another 4 minutes, and after which I will take it out. So in the 4 minutes, let's tell jokes, let's sing and dance and see what we can do. और हमारे साथ यहाँ पे अहमद फैमिली किचन और क्यूज बेसिक और शाजिया's recipes और अंजू खान और anybody else who is interested in cooking. Do you have any past experience cooking this dish or any other makluba dish, by the way? Sing and dance in kitchen means just keeping everyone busy, right? The show must go on. Right now, it's getting a little boring. So, but if you have any experience in making tahchin as we call it, Tahchin Joojeh, which literally means layered chicken in English. So that's what we are cooking today, and it is very similar to very makluba dishes in Arab cuisine, which basically literally means cooking upside down. So you cook it upside down and then you turn it over. So the turnover aspect of it is what I'm asking if you have any makluba dish. My favorite one, ji makluba jo hai, that is the best part because it has that beautiful crust underneath. I'm only worried that it hasn't formed the crust. So if I when I turn it over, it is not going to be as good as it should be. तो जरूर ट्राई कीजिएगा. इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मौजूद है, इसको आप आके बाद में देख भी लीजिएगा हमने किस तरह से बनाया है, किस तरह से लेयरिंग की है. So that is going to be an awesome thing for us. So 2 more minutes and I'm taking it out no matter what. तो रेसिपीज भाई शाजिया, आपको अगर टिप्स देना चाहें तो जरूर दीजिएगा, कोई आइडिया देना चाहें तो जरूर दीजिएगा. मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनाया है इसको, तो इसलिए I don't have all the tips and tricks that I usually give. This is something that I'm not very familiar with. So if you have any tips for us, please give them. By the smell of it, I can tell it is going to be the awesome dish that we expect it to be always. All right, we're a little over our time today. My apologies for that, but I want you to have a good experience with this as well. So 1 more minute to go. Let me get my oven mitts. कितना टाइम खाना भी है, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से जी. बस 30 more seconds and I'm taking it out. I'm sorry it's taken this long, but I'm just taking it out. I did not want to go over time, but this is something that is already in there. So let's just another 20 seconds and I'm taking it out.
पहले उसको निकाल के देखेंगे, फिर उसको पलटा के देखेंगे. All right. Three, two, one. There you go. So it is what it is now. Hopefully it will be good. But let's see. Now, wow. Looks very nice so far. Looks like it did exactly what we wanted it to do. I will not be surprised if we actually have some crust. So take out the foil. And now the moment of truth. And Q's Basic, you said I should wait before turning it over. Okay, let me show it to you first, how it looks. So this is how it looks right now. As you can see, there is this butter and all that oil and everything that is climbing, that is still coating all of that and cooking it. And there are some crusty looking rice at the bottom. So this is what it is right now. And all I have to do is a skill that I have never mastered. So I'm actually gonna not use my oven mitts because they may be too restrictive. I'm going to use maybe kitchen towels and see if that works out better. Give me better ability to grab it. Okay. So basically, it goes like this, you know. So you have to really time it beautifully, otherwise you make a mess of it. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. And it's glass, right? So I don't want to break it either. Maybe if I do it this way, like this. Whew. Doesn't look like a crust, but it's not that bad either. So let's see where it is. It has a crust, and I kind of broke it from here, but it looks beautiful right now. Now, 10 more minutes, and it would have been absolutely perfect. All right. So I did not have 10 minutes. I actually am over my time today. Sincere apologies for that. But there was a little bit of crust that was stuck, but beautiful. That is what I was waiting for. So you see, it is already turning crusty and golden on the side. All it needed was 10 more minutes in the oven, and it would have been just perfect. All right, so what are we going to do? We're going to cut this cake. So I'm going to just go with my knife. This is butter knife. It's just going to go like this. And it's just going to go like, you know, just like a slice of cake. And I'm going to take that slice of cake I think I have just the thing for it. In fact, I should have garnished it. I was so excited, I just started cutting. But basically, my idea for garnish was to just go in the middle with the with currants and make a little circle, and then a second circle with little green. And you can garnish it. Of course, I'm not the best expert in garnish, so you can garnish much better if you want. And then take some almonds and make a third side circle. And that would be my idea of just rough garnishing it. People make elaborate designs
amazing designs. They make heart shapes, they make flowers, they put rose petals on it. But me being a simple guy trying to make food simple, I think that will be overachievement for me. So that is our thing. And now that I have cut this part, I'm just going to try and take it out on a plate and see how it looks. So I definitely did butcher it to some degree, but in a good way. So this is what it looks like once I take it out. So side by side, I can remove that. This is the final result, guys. Everyone, that's what I took out, and that's the overall dish. Please let me know how it looks. It's gonna be even better. So when you are doing, give it 10 more minutes, and it will be perfect. All right. Wow, glass is safe. Gee, this is glass is safe. Yes, I could I couldn't break it. I tried it. Um, all right, Umid Suba, thank you very much for joining. Everyone, thank you very much for joining. Thank you. We are way over our time. I hope that I didn't cause any issues. Ramzan is very busy time. But Sobi Kitchen, hope you liked it. You stuck it, and it was totally worth it. So you stuck with the time and you stayed with us. Thank you very much. So this is a beautiful dish that we can make. It's almost like a biryani cake. So hopefully you will try it. It's not spicy. It is flavorful. I cannot eat right now. That's a shame. I wish I could, but do try it. And if you try it, please tag me so I can come and I can give you my feedback. And that's how we can grow together. So tag me if you try it, and if you make something and I try it, I will definitely make sure that I tag you as well. So we want to make sure that we do our best. Uh, yes, Ahmed's Family Kitchen. I know that your channel is awesome, and I'm trying to push the limit on what we can do. So we are going in this Ramadan. We are going through all the Muslim world. There's so many countries that we have to visit. Today we visited Iran. This is Iran for you guys. This is Iran. It is called. It is the name is Tahchin. Tahchin. It's called Tahchin or Tahchin. It literally means the one with layers, and Tahchin Joojeh means the chicken that is with layers. So that was our dish today. We stopped by in Iran and we created this beautiful dish, and hopefully you will love it. And with that, thank you very much for joining. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.